Good morning, dear students. Today we have SPCC chapter 3, that is incorporation of company. I hope you all are doing well. So now let's begin the today's lesson. I hope you all are ready for your today's class. Right? In a commercial setup for large-scale trade, the formation of company is the most suitable arrangement. Company possesses artificial personality. Its legal personality doesn't automatically come into existence. कंपनी की जो आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, कोई भी कंपनी है उसका अपना एक लोगो होता है, ठीक है। वो लोगो से उसकी पर्सनालिटी, वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ऐसा प्रूव होता है। So the procedure of incorporation of a company is complicated and lengthy. Sole proprietorship form can be established easily. Why? Because sole proprietorship में सिर्फ एक ही ओनर होता है और उसका भी जो बिजनेस है वो भी लिमिटेड होता है। So sole proprietorship form can be established easily. But the nature of partnership form is broader than the sole proprietorship form. Right? The registration of a partnership form is optional. As compared to that, the incorporation procedure of a company is lengthy, complicated and expensive also. A company comes into existence after having complied with the provisions of the Companies Act, registration of necessary documents and completion of the legal procedures. The persons who establish such artificial legal personality are known as promoters. आप सबने promoters वर्ड सुना होगा, इस मूवी को इसने प्रमोट किया है, राइट। तो जो पर्सन है जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करते हैं उसको प्रमोटर्स बोलते हैं। नाउ द कंपनीज एक्ट इन इंडिया। डेफिनेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। Companies Act 2013 is introduced stage-wise, right? Before that, Companies Act 1956. So after independence, the Companies Act 1956 was introduced in India. Thereafter, provisions of the Companies Act 2013 are gradually being made applicable. Now the meaning of company. The word company has no strictly technical or legal meaning. Under the British common law, company is defined as a legal person or legal entity. It is separate from and capable of surviving beyond the lives of its members. The members of any company may change, retire or die, but it doesn't affect the existence of company. कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो आते जाते रहते हैं, रिटायर भी होते हैं, उसकी डेथ भी होती है, वो बदलते रहते हैं, पर उससे कुछ कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मस्ट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. Independent corporate existence is one of the most significant features of company. Company is regarded as a legal person having entire distinct personality independent from its members. Right? Now limited liability of company's members. I think it is clear to all. So second characteristics is the limited liability of company's members. The company being separate legal person is the owner of its assets and bound by its liabilities. Members even as a whole are neither the owners of company's undertakings nor liable for its debts. The members' liability is limited only to the nominal value of the shares taken by them. Right? Now, no member is bound to contribute more than the nominal value of the shares held by him. वो तो ऑब्वियस है कि कोई भी मेंबर है उसने जितने शेयर हेल्ड किए हुए हैं, जितने शेयर्स के वो शेयर होल्डर्स हैं
उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है उससे ज़्यादा वो किसी भी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी वहाँ तक की ही लायबिलिटी रहती है. हावेवर कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटीज कैन बी फॉर्म्ड. Okay, so independent corporate existence and limited liability of company's members. Then third one is perpetual existence. A company is defined as an artificial person. It has perpetual existence. It is not subject to death or illness of any of its members. Perpetual existence, in simple words we can say that कि कोई भी कंपनी है उसको ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो हमेशा रहेगी. कोई भी मेंबर्स आता है या जाता है, कुछ भी होता है, पर कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहेगी. सो इट्स कॉल्ड परपेचुअल एग्जिस्टेंस. देन सेपरेट प्रॉपर्टी. बीइंग सेपरेट लीगल पर्सन, कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. अपने खुद के नाम से वो सब कुछ करते हैं. नो शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन क्लेम हिज राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी. कोई भी शेयर होल्डर है वो कंपनी के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी. फिफ्थ इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस laid down in the articles of association of a company, the shares of a company can be transferred. What is article of association? We will learn in next topic. इन इनकॉर्पोरेशन स्टेज, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सब होता है ना, वो एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जो कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए करनी पड़ती है. तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें अगर ऐसा प्रोविजंस हो तो वो कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. राइट. नाउ द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू sue and be sued. A company being legal person in the eyes of law can initiate legal proceedings against anyone as well as it can be sued by any person in its own name. In the same manner, suit can be filed against a company by any person for breach of contract. Right? I think it is clear to all. Then seventh is professional management. The corporate sector is capable of attracting the growing cadre of professional managers. प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें ओनर ही खुद सब कुछ मैनेज करता है. जो भी कुछ भी करते हैं वो ओनर खुद सोल प्रोप्राइटरशिप में वही करते हैं. राइट. बट प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो ज़रूरी है कंपनी इनकॉर्पोरेशन में. So it is the essential characteristics of company. Then eighth is finance. Normally as incorporated company comes into existence on the capital raised by public subscription, either from shares or debentures. कोई भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है वो कब एग्जिस्टेंस में आ सकती है? जब वो कैपिटल रेज कर सके. किसके थ्रू? पब्लिक सब्सक्रिप्शन, either from shares or debentures. I think you all know about what is share and debentures. ये सब आप ओसी में पढ़ चुके हो. ठीक है. Now the procedure for incorporation of company. कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 2 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रिलिमिनरी स्टेज एंड सेकंड वन इज़ इनकॉर्पोरेशन स्टेज. जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, ठीक है, उसमें क्या होता है? सो उसमें 5 स्टेप्स होते हैं. राइट. So preliminary stage, this is the first stage involving the conception of the idea of setting up a company and the primary and extensive investigation of the feasibility of the idea, the requirement of resources and capital, etc. Thus the promotion of the company can be considered through the following steps.
First one is the idea for the promotion of a company or business. It is the first step. The concept or the idea of a business by one person or a group of persons start the process of business formation and consequently the idea of establishing a company for the same. The idea is the seed of a business and the promoter who conceived the idea uses his imagination and creativity to give it a concrete form, and he is also ready to bear many risks. He converts idea into implementation by mobilizing manpower, material and capital resources to carry out business. Thus company comes into existence and company is known as brainchild of promoters. You can say that company is known as brainchild of promoters. Right, now second step is primary investigation. After considering the idea and its possibility, the economic viability is checked out with the help of experts. The expenditure and income estimate is taken, and if the result is satisfactory, further detailed survey is conducted. Right? So first step is the idea for the promotion of a company, and second is primary investigation. Third is extensive investigation. There can be adverse results if through investigation is not undertaken. The government policies, legal provisions, availability of raw materials, the demand supply situation, the availability of auxiliary services, etc. are carefully checked. Obviously, these all things should be checked so that a clear picture is created, which will help to decide whether to proceed with the plan to establish a company or not. सिर्फ फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप करने से ही पता नहीं चलता कि ये कंपनी एस्टेब्लिश का प्लान है वो कैसे करे या ना करे. प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है. गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं, डिमांड कितनी है, उसके सामने सप्लाई हो सके कि नहीं, वो सब सिचुएशन, जितनी भी सर्विसेज उसके लिए चाहिए वो सब अवेलेबल है या नहीं. राइट. Then fourth one is mobilizing resources. If it is decided to proceed with the project, the arrangement for resources like equipment, machinery, tools, land, etc. will be made and necessary correspondence, contracts and formalities will be undertaken. ठीक है, ये सब करना पड़ता है. Then fifth step is arrangement of finance. For mobilizing the resources and for the promotion expenses, finance will be required. We have learned in chapter 8 of OC. The resources of finance, right? The type of activity and the amount of funds required by the company as well as the sources of capital will be considered. Now the incorporation stage. After having completed the preliminary stage, the second stage in the direction of process of formation of a company is called incorporation stage, wherein certificate of incorporation of company is to be taken. A private company has limited members and its shares transfer is restricted. So company can start functioning after certificate of incorporation. Without certificate of incorporation, company cannot start functioning. Right? So a private as well as public company need the documents in order to get certificate of incorporation. First one is memorandum of association. This is the basic document of the company. The details or clauses mentioned in it define the scope of activities of the company. It includes the name of the proposed company, its objective and the address of its registered office, the capital and the liability of its members. It establishes the relations between the company and the third parties.
Right? Memorandum of association is one of the most important, basic, and primary requirements for every company. कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना एस्टैब्लिश नहीं हो सकती. राइट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स द टाइप्स ऑफ बिजनेस द कंपनी वांट्स टू अंडरटेक. सेकंड रिक्वायरमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. This document defines the rules and regulation for the internal management of the company. Right? It states the company's policies and means of achieving the objectives determined in the memorandum of association. इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब किया गया होता है. राइट? नाउ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. A list of the names, addresses, age, occupation, nationality, etc. of the persons who take responsibility of the work as directors has to be prepared and submitted before the registrar of companies as per the Companies Act. There has to be at least one woman director for certain companies among the list of directors decided by Companies Act. Right? I think it is clear to all. Fourth one is written consent and affidavit of the directors. Each subscriber or director has to give a written consent to the registrar that he has accepted the responsibility to work as a director willingly, not forcefully. Right? So moreover, the subscribers and first director has to file affidavit before the registrar of company containing facts. That is, he has not been convicted for any offense. Right? Second one is he has not been found guilty of any fraud or misfeasance. And the information supplied to the registrar of companies are correct and complete. राइट? तो ये सब एफिडेविट करवाया जाता है जो भी डायरेक्टर्स हैं उन लोगों के पास. Now the declaration, a declaration in the prescribed form signed by an advocate, a chartered accountant, cost accountant or company secretary. इन प्रैक्टिस जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, उसकी साइन चाहिए और उसके थ्रू ही डिक्लेरेशन होता है. पता है ना आप सबको, चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो आप लोगों में से किसी को भी अगर बनना है तो वो कर सकते हैं. कॉमर्स में है CA, फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ICAA, चार्टर्ड अकाउंटेंट के कौन है ICAI, कॉस्ट अकाउंटेंट में ICAA, कंपनी सेक्रेटरी CS. सो ये प्रोफेशनल जितने भी है उसकी साइन के थ्रू डिक्लेरेशन करवाया जाता है. Whoever is involved in formation of the company and also signed by persons named in the articles of association of the company as a director, manager or secretary of the company. इन लोगों के साथ जो आर्टिकल एसोसिएशन है कंपनी का, उसमें जो एज अ डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, कंपनी का सेक्रेटरी, उन सब का भी डिक्लेरेशन चाहिए. देन सिक्स्थ इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनी. If the directors, subscribers, manager or secretary are also associated with other firm or company, they have to give information regarding their association. कई बार कैसा होता है कि कोई एक ही पर्सन है, वो सिर्फ एक कंपनी नहीं दूसरी कंपनी में या फर्म में भी डायरेक्टर्स होता है या मैनेजर होता है या फिर सब्सक्राइबर होता है. ठीक है? So they have to give information regarding their association. Right? So ये सब 6 steps है इनकॉर्पोरेशन स्टेज का. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटर्न कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ द डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनी. अब
अब ये सब होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. After payment of prescribed registration fees and verification of the documents, if the registrar finds the documents to be satisfactory, he registers them and enters the name of the company in the register of companies. After this process, the registrar issues a certificate called Certificate of Incorporation. The life of company commences from the date mentioned in the Certificate of Incorporation. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट होती है, उस डेट से कंपनी की लाइफ स्टार्ट होती है. जैसे हम सबकी बर्थ डेट होती है ना, उसी तरह. द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विथ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. उसका एक नंबर होता है जिसको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं. This identification number is of company which is incorporated in certificate of incorporation. The company has to preserve the identity, original document and information till liquidation at company's registered office. So इस तरह से कंपनी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कंपनी का जब तक लिक्विडेशन ना हो तब तक उसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे रहता है. राइट. Now this chapter is over now. We will meet in next lecture with next chapter. I hope you all are understand and enjoyed well. Thank you.